Hello students, now we'll begin with the civics chapter, that is the Indian Constitution. In this chapter we are going to learn about what is a constitution, why does a country need a constitution, we'll learn about Indian Constitution and key features of Indian Constitution. So let's begin with the chapter. First we'll talk about, there's one story we'll see. We are going to begin with football, a game many of you have probably heard of or even played. आपने ये गेम देखी भी है और आप सब ने ये गेम खेले भी होंगे. According to the rules of football, if the ball touches the arm of any player except goalkeeper, उसके अलावा किसी के आर्म पे वो टच होता है, then it is considered a foul. So if players start holding the football in their hands and passing it around, then they are not playing football anymore. Similarly, other games such as hockey, cricket, we can talk about many games. See, every game has a rule. To play any game, we have to follow those rules. Okay. Now see, each of these rules helps define the game and helps us distinguish one game from another. As these are fundamental to the game, we can also call them the constitutive rules of the game. Like these games, a society also has constitutive rules that make it what it is and differentiate it from other kinds of society. So ऐसे ही जो सोसाइटी हम बोलते हैं, समाज बोलते हैं, तो उसमें भी ऐसे रूल्स बनाए गए हैं जो फॉलो करने होते हैं. In large societies in which different communities of people live together, these rules are formulated through consensus, and in modern countries this consensus is usually available in written form. A written document in which we find such rules is called a constitution. एक ऐसा डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट जिसके अंदर एक फॉर्मुलेटेड रूल्स होते हैं जो कि लोगों को फॉलो करने होते हैं, एक सोसाइटी को फॉलो करना होता है, दैट इज known as constitution. We have looked at the Indian Constitution in class 6 and 7 in our social and political life textbooks. आप आगे civics में पढ़ चुके हैं, ठीक है. तो each of these features is crucial to the working of democracy. मतलब ये चैप्टर में हम यही देख रहे हैं कि क्या की फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के. सो विल सी दैट. Now we'll talk about why does a country need a constitution. कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत होती है. एक तो है द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स सेवरल पर्पसेस. वो बहुत सारे सर्विसेज देते हैं, जैसे कि वो सर्टन आइडियल्स होते हैं दैट ऑल सिटीजन्स बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड. फॉर एग्जाम्पल नेपाल, मतलब नेपाल है, मूव्स फ्रॉम मोनार्ची टू अ डेमोक्रेसी. Why? Because previous constitution does not reflect the ideals of the country that the citizens want Nepal to be. तो वो मोनार्ची से वो डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो जाते हैं. उसी तरह से वो एक डिफ़ाइन करता है नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम. कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम को डिफ़ाइन करता है, कैसे वो कंट्री वर्क करता है, उसका पॉलिटिक्स कैसे काम करता है. एंड थर्ड थिंग इज कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स सम प्रोविजंस. कुछ प्रोविजंस होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो इजीली हम चेंज नहीं कर सकते हैं और हमें उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है. एवरी सिटीजन हैज़ टू फॉलो इट स्ट्रिक्टली. यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हो. इट इज़ इन 1934 इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड द डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो आप देख सकते हो जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू वो एड्रेस कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को. Today most countries in the world have a constitution. While all democratic countries are likely to have a constitution. Democratic country मतलब लोकशाही देश. It is not necessary that all countries that have a constitution are democratic. हर एक constitution democratic हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है. The constitution serves several purposes. First, it lays out certain ideals that form the basis of the kind of country that we as citizens aspire to live in. मतलब बेसिक आइडियल्स वो, जैसे मैंने बताया आपको कि बेसिक लॉज वगैरह बनाते हैं.
और वो country is usually made up of different communities of people. As we see in India, there are lots of communities in our country, and people are living in India. They share certain beliefs but may not necessarily agree on all issues. They share beliefs मतलब कई चीज़ें हैं जो सब मानते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें हर चीज़ पे वो एग्री हो जाए. A constitution helps serve as a set of rules and principles that all person in a country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed. मतलब एक कंट्री कैसे गवर्न होनी चाहिए, कैसे वर्क करनी चाहिए, तो वो चीज़ें उसमें बताई जाती है. These includes not only the type of government but also an agreement on certain ideals that they all believe the country should uphold. मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ टाइप ऑफ गवर्नमेंट नहीं बताता है, पर एक अग्रीमेंट जैसा ही है जिस पे लोग बिलीव कर सकते हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है. Now let us try and understand what we mean by this through two contrasting situations in the recent history of Nepal, a country that borders India on the north. जो बॉर्डर साइड में है, नॉर्थ साइड में. Until recently Nepal was a monarchy. The previous constitution of Nepal, which had been adopted in 1990, reflected the fact that the final authority rested with the king. मतलब जो लास्ट अथॉरिटी थी वो किंग के साथ थी इससे पहले नेपाल में. A people's movement in Nepal fought for several decades to establish democracy. यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत ही फाइट कर रहे थे डेमोक्रेसी के लिए, ताकि उनका जो कंट्री है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो जाए. तो ये जो राजाशाही मोनार्ची कंट्री थी, मतलब वो एक राजाशाही देश था, तो उसे कन्वर्ट करना था लोकशाही में, दैट इज़ इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. द पीपल हैड टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टैब्लिश नेपाल एज अ डेमोक्रेसी. द रीज़न दैट दे डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन, जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन वर्क कर रहा था वो उन्हें नहीं चाहिए था और वो उन्हें चेंज कर रहा था. The previous constitution is because it did not reflect the ideals of the country that they want Nepal to be. मतलब नेपाल जिस तरह होना चाहिए वो आइडियल एक रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहे थे. सो दे वांटेड अ डेमोक्रेटिक कंट्री. तो इस चीज़ के लिए उनके सिटीजन्स ने दे फाइट अगेंस्ट ऑल पीपल. यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स. As in the game of football, in which a change in the constitutional rules will change the game altogether, Nepal, by moving from monarchy to a democratic government, needs to change all its constitutive rules. अब जैसे अगर हम it's changing from monarchy to democratic government, तो बहुत सारी changes हो गए वो society के अंदर. That is why the people of Nepal adopted a new constitution for the country in 2015. तो 2015 में उन्होंने नया constitution adopt कर लिया. And the caption alongside elaborates Nepal's struggle for democracy. The second important purpose of a constitution is to define the nature of a country's political system. For example, Nepal's earlier constitution stated that the country was to be ruled by the king and his council of ministers. जैसे हमारे यहाँ होता था किंग और उसके जो मिनिस्टर्स होते थे वहाँ पे वही फॉलो करते थे सेम वे. इन कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म, मतलब जहाँ पे लोकशाही फॉर्म अडॉप्ट कर लिया है, गवर्नमेंट हो गई है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्रूशियल role in laying out certain important guidelines that govern decision making within these societies. मतलब उन्होंने डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ ने जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो किया है वो एक बहुत अच्छा चेंज लाया है उसके अंदर. इन डेमोक्रेसी वी चूज़ आर लीडर्स, हम हमारे लीडर्स चूज़ करते हैं सो दैट वी कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबली ऑन आवर बिहाफ. मतलब हम सोच समझ के ये फैसला ले सकते हैं दैट हु शुड बी आवर लीडर, कौन हमें लीड कर सकता है. However, there is always the possibility that these leaders might miss authority, and the constitution usually provides safeguard against this. अगर कोई लीडर ऐसे हम उसे सिलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, अगर वो मिसयूज़ भी करता है अपनी अथॉरिटीज़ को, अपने पावर्स को, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सेफ गार्ड है, मतलब वो हमें इसके अगेंस्ट. नाउ विल सी वन क्लासरूम सिचुएशन so that you can understand the topic.
Suresh is the class monitor. He is a bully. His classmates are not too fond of him. Mrs. Rao, the class teacher, has to leave the classroom on some urgent work. क्लास टीचर को कुछ वर्क था तो उन्हें क्लासरूम जाना छोड़ के जाना पड़ा। तो जो सुरेश बॉय है तो उसे कहते हैं मतलब सुरेश ऐसा था कि वो खुद को जैसे दादा समझता है लीडर करने वाला ऐसे वो समझता था। सो that was the nature of Suresh and when teacher left the classroom she asked Suresh to mind the class. So Suresh starts picking on Anil. Anil, today I am going to report you to Mrs. Rao. But what have I done? Now Anil is asking कि मैंने क्या किया है. Okay. Then when Mrs. Rao returns to the class, that time he complains that ma'am while you were away Anil kept talking loudly and disturbing the class. अनिल जो है वो क्लास में बातें करा जा रहा था और डिस्टर्ब भी कर रहा था क्लास में. So he would not listen to me and if I said him that not to talk then too he was not listening, said Suresh. Now Anil, teacher said, Anil you will have to stay back after school today and write I'll not disobey the class monitor 100 times. You have to write down 100 times that you are not going to disobey the class. But ma'am, I did not do anything. Anil replied that I have not done anything. Now you understood that how Suresh misused his powers. In democratic societies, the constitution often lays down rules that guard against the misuse of authority by our political leaders. अगर हमारे political leaders authority को misuse करते हैं, so there are some laws which are made in our constitution against those injustice. In that case of the Indian constitution about which you will read more later in this chapter, many of these laws are contained in the section on fundamental rights. Now, do you recall the chapter on Dalit writer Om Prakash Valmiki's experience in school from your class 7 book? In that chapter, we talked about the discrimination Om Prakash faced. ओम प्रकाश ने जो डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव सहा था उसके बारे में बिकॉज ही वॉज अ दलित, ही बिलोंग टू अ लो कास्ट फैमिली. You read about how the Indian Constitution guarantees the right to equality to all persons and says that no citizen can be discriminated on grounds of religion, race, caste, gender and place of birth. Regarding this, कोई भी citizen के against discrimination नहीं होना चाहिए. That is written in our constitution. The right to equality is one of the fundamental right guaranteed by the Indian constitution. ये एक हमारा right है कि सब equal है, हमें caste, religion कुछ भी देखना नहीं है. Another important function that a constitution plays in a democracy is to ensure that dominant group does not use its power against other. मतलब अपना power दूसरों के against use नहीं कर रहे हैं जो less powerful people है या कोई group है. The storyboard below demonstrates one such situation in the classroom. Now you can see one more situation is shown over here. Let's play basketball today for a change. No, we will play cricket. Girls are telling to play basketball, boys are telling to play cricket. The teacher decides to settle the problem with a show of hands. Here, girls say we always have to do what the boys want because they are in a majority. ये ऐसा उन्होंने क्यों कहा? Because the teacher decides to settle the problem with a show of hands. We won. Obviously there are more boys in the class. मतलब boys की majority है और हम जीत जाए, that is not okay. Ma'am should think of another way to make decisions so that our wishes are also heard. मतलब कि दोनों की decisions सुने जाए, उस तरह से उन्हें decision लेना चाहिए जो दोनों की तरफ है. Such unhealthy situation can occur in democratic societies too, where a majority can continuously enforce decisions that exclude minorities and go against their interests. As the above storyboard illustrates, every society is prone to this tyranny of the majority. The constitution usually contains rules that ensures that minorities are not excluded from anything that is routinely available to the
मेजॉरिटी। अब ऐसी सिचुएशन जैसे ये गेम्स में आई, वैसे सोसाइटी में भी आ सकती है कोई भी चीज़ को लेके। और ये जो स्टोरी बोर्ड है वो एक इलस्ट्रेट करता है कि हर एक सोसाइटी है वो ऐसे जुल्म, टायरेनी मीन्स जुल्म, वो उसको सहती है। तो constitution has some laws so that they don't have to bear it. So another reason why we have a constitution is precisely to prevent this tyranny or domination. मतलब इसी चीज़, ये चीज़ ना हो, उसी के वजह से constitution होता है। And this can refer to one community dominating other, मतलब inter community domination। मतलब ये सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें constitution ज़रूरी है। The third significant reason why we need a constitution is to save us from ourselves. हमें खुद को खुद से ही बचाना है। This may sound strange, but what is meant by this is what we might at times feel strongly about an issue that might go against our large interest, and the constitution helps us guard against this. Now we'll look at this storyboard given below.